Walaikum salam, sir. I'm fine. How are you? I'm good. I remember you sent me a question, right? Yes. Sure. Just because I will discuss that question with the class and then we can proceed on. Okay? Because it is something that we have already done. Now, the question is saying a swimmer coming out of a pool is covered with a film of water weighing about 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of vaporization at 100 degrees Celsius. Internal energy of vaporization, okay. And enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin. 373 and 100 degrees Celsius, no? Is equal to it now. Okay, write this question down. Okay, so here you have been given the delta H. आपके पास जो reaction होगा, that is vaporization. That means we have H2O liquid that is converting to H2O gas. Okay. Now, what is the relationship between delta H and delta U, guys? Tell me. What is the relationship between delta H and delta U? All of you know, right? Delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Is that right? Yes or no? Please tell me, guys. Correct hai? Yes, sir. Okay. Okay. Now, our question is defining what is the amount. Amount kya aapke paas? 18 grams. Okay. The amount is 18 gram. So you have 18 gram of liquid. It will convert to 18 gram of gas. Now, 18 gram of water will also mean you will have 1 mole of water because the molar mass of water is 18 grams per mole. है ना? तो आप 18 gram लिखिए, चाहे आप इसको 1 mole लिखिए. This will be 1 mole, and this will also be 1 mole. Okay, this will also be 1 mole. Now, here you have been given the delta H. आपको क्या find करना है? Delta U. So I will write it like this. Delta U is equal to delta H plus delta NGRT. Now, what is Ng? Delta Ng is equal to number of gaseous molecule in the product minus number of gaseous molecule in the reactant. Number of gaseous molecules in the product is 1 mole of gas is there, and you have 0 moles of gas in the reactant. So delta Ng, it is equal to 1. Now, this will be equal to delta H is 40.66 kilojoules per mole plus delta Ng is 1 into the value of R is going to be 8.314 into temperature is given as 373. ठीक है, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, you will get the answer of delta U. Okay, so that much delta U है ना? Oh, delta U है तो हाँ, sorry, it will be minus. I can subtract it from here.
There was another question. ये 1 लिखा हुआ है क्या फहद? Yes, sir. When 1 gram of liquid naphthalene this is solidifies, right? Solidifies, then 149 joule of heat is evolved. So you have naphthalene liquid to naphthalene solid. This has delta H of minus 149 joules. Calculate the heat of fusion of naphthalene. देखिए इसमें आपके पास ना ये 1 ग्राम का दिया हुआ है, ठीक है? This is for 1 gram of 1 gram of naphthalene. - 149 जूल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप डेल्टा H is equal to 149 minus 149 joules. Now molar mass of naphthalene कितना हो जाएगा? 12 into 10 plus 8 into 1 to 120 plus 8, that will be equal to 128 8 grams per mole. यहाँ पे इन्होंने पूछा है कैलकुलेट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ नैफ्थलीन। तो जनरली जब हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने पूछा तो दे आर एक्सपेक्टिंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो मोल, एक मोल का वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो एक ग्राम में इतना अगर आपका इवॉल्व होता है फॉर 128 ग्राम ऑफ नैफ्थलीन, to be minus 149 into 128. कितना हो जाएगा ये? जिसमें joules of energy is given out when it solidifies. And what is fusion? देखिए 1 mole of naphthalene liquid to 1 mole of naphthalene solid, delta H naught कितना आया हमारे पास? This came out to be minus 19072 joules. इसी को फॉर फ्यूजन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका ना। फ्यूजन में क्या हो रहा है आपके पास? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन सॉलिड से 1 मोल ऑफ नैफ्थलीन लिक्विड। तो इसमें जो डेल्टा H नॉट है दैट विल बी जस्ट द अपोजिट, तो ये प्लस 19072 होगा जूल्स। दैट्स इट। Oh, ठीक है।
these like generally ना ये words जो भी है ना, enthalpy of fusion हो गया या फिर enthalpy of vaporization, उसका हमेशा आप एक reaction लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? If you write a chemical or a balanced chemical reaction, then you will understand कि अच्छा हो क्या रहा है actually में, ठीक है? तो जितने भी words हैं ये, इनका आप reaction लिखने की कोशिश कीजिएगा. And today we are going to learn a few more enthalpies. Please write enthalpy of different types of reaction. Right, number one, standard enthalpy of combustion. We write this as delta H naught C. Now, as you know, all of these standard enthalpy of all of these enthalpies of, they will restrict your reaction. है ना? Reactions को यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा restrict करेंगे. So here it is the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion. Enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion. Another definition that you can run is the heat change accompanied by combustion of one mole of a substance. Combustion का मतलब क्या होता है? Reaction with oxygen. यहाँ पे for example, if I have of methane, enthalpy of combustion of methane अगर हमने लिखा है, that means I will have only one mole of methane. Reaction हम लोग क्या लिखेंगे? The corresponding reaction for this will be CH4 plus O2, giving you carbon dioxide and water. ठीक है? Carbon dioxide and water. Now you can balance this also. So we have how many? We have 2 oxygen यहाँ पे हैं, 2 hydrogen. Now it is balanced. और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 4. So it will be 2 oxygen. Now this particular reaction जहाँ पे 1 mole of CH4 या फिर 16 gram of methane is going to react with oxygen and it is going to combust. तो ये जो भी एनर्जी देगा उसको क्या बोलेंगे हम? We will say that is the enthalpy of combustion of CH4. For example, if you have something other, let us suppose you have butane C4H10. So यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा plus O2. You will get you will get carbon dioxide and you will get water. How much carbon dioxide will we be getting? We will be getting 4 moles of carbon dioxide because there are 4 carbon atoms. And how many water we will be getting? We will be getting 5 water molecules because there are 10 hydrogens. अब उसके बाद oxygen कितना हो जाएगा? Please see here. Oxygen will be equal to 4 2 is 8 plus 5 13. So this will be 13 by 2. ठीक है? इसमें आप लोग change नहीं कर सकते. This will be always 1 mole of CH4. This will be always 1 mole. If you are talking about the enthalpy of combustion, तो जो substance combust कर रहा है, that should be 1 mole always in the balanced chemical reaction. You cannot change that. Right, next, standard enthalpy of atomization.
This is delta H naught A. Now, in atomization क्या होता है आपके पास? You take any molecule और उस molecule के अंदर जितने भी whatever atoms are present, you just break all of those atoms. For example, एक simple case होगा आपके पास hydrogen gas का. You will convert this to 2 hydrogen atoms. अगर आपके पास है methane CH4, then you will convert this carbon to also a gas individual atom, or will also convert the hydrogens 4 hydrogen into 4 hydrogen atom in gas state. Gas state, why? Because they are not interacting with anything else. ठीक है? If you have carbon solid, carbon liquid, तो carbon solid अगर होता है तो isolated नहीं होता है, because solid का मतलब ही है that it has some other carbon atoms nearby. है ना? For example, if you have sodium solid, इसका atomization क्या हो जाएगा? Sodium gas. Okay, so if the end product is going to be an individual atom in gaseous state, then it is known as standard enthalpy of atomization. Please write the enthalpy change accompanied in conversion of 1 mole. अच्छा, ये सारे 1 mole रहेंगे. As you can see, this is also 1 mole, this is also 1 mole, this is also 1 mole. ये बाकी change हो सकता है. The enthalpy change accompanied in conversion of 1 mole of substance into its individual element in gaseous state is called enthalpy of atomization. Right, the third one, bond enthalpy. जी, done everyone? Right, next, bond enthalpy. Please write energy required to break to break 1 mole of
particular bond, 1 mole of a particular ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। एंड ऑल्सो व्हाट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट नहीं ब्रेक करना है, यू हैव टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी दो किस्म के होते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, व्हाई, बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल इट हैज ओनली 1 बॉन्ड, है ना। फॉर एग्जांपल in diatomic molecules the bond enthalpy is bond dissociation energy, ठीक है, bond dissociation energy। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें H2 को, H2 में क्या होता है, you have HH bond, there is only 1 bond पर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है। तो आप क्या कीजिए, 1 मोल हाइड्रोजन ले लीजिए एंड यू ब्रेक दिस एंड यू विल गेट 2 हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म। ये भी आपके पास गैसेस फॉर्म में होना चाहिए एलिमेंटल स्टेट में। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डेल्टा H नॉट ऑफ HH बॉन्ड। सिमिलरली अगर आपके पास Br2 हो, ठीक है ना। इफ यू हैव polyatomic molecules, for example you have CH4। now if you look at CH4, if you have 1 molecule of CH4, आपके पास कितने bonds आ गए, you have right now how many bonds, you have 4 CH bond। इसमें कितने हमारे पास है, 4 CH bond। if I take 1 mole of it, then you will have 4 CH into, you will have how many, 4 moles of CH bond। तो क्या करना पड़ेगा, you break all the bonds, ठीक है ना, you break all the bonds और उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से। so you have CH4 and if you break all the bonds you will get 1 carbon atom and you will get 4 hydrogen atoms, and whatever the reaction enthalpy is for this part, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए whatever you have delta H naught R, what you need to do, if you want to calculate the delta H naught of CH bond, आप इस रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दीजिए, इस एंथैल्पी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। Why are we dividing it by 4? We are dividing it by 4 because we have broken 4 moles. And the bond dissociation enthalpy, the bond enthalpy says that it is the energy required to break 1 mole of particular bond. तो CH bond आपको 1 mole break करने में कितना लगा? This reaction का enthalpy divided by 4. Please write this down. 4 से नहीं, हमेशा 4 का मतलब है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं एक मॉलिक्यूल में, है ना। सिंस CH4 हैज 4 CH बॉन्ड्स, तो 4 से डिवाइड किया। कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए BF3 है, सो यू विल डिवाइड द you break all the bonds between boron and fluorine and then you will divide it by 3 because वहां पे 3 bonds है। ओके चलिए, write this down, then write a question। if I break SF6 into sulfur gas plus 6 fluorine atom in gaseous form, it has delta H naught R is the enthalpy, ये इसका enthalpy है। choose the correct relation।
Please choose the correct one ABCD में. Yes, Fahad, correct. Yes, Hiba, correct. बाकी लोग भी आंसर करें गाइस. जानिया, तारीफ, वजीहा, यूसुफ. अच्छा, काफी लोग हैं. फिर आंसर करें गाइस. हाउ मेनी बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स होंगे SF6 में? Think how many bonds will be there and divided by that number. डेल्टा H नॉट R को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए. Yes, तारीफ. What about others? Jania, Waziha and Yusuf. Abdullah is also here. काफी लेट आते हैं यानी आप लोग. टाइम से आया कीजिए. Why? I don't know why you guys are late. फिर आप लोग का कुछ कुछ पोर्शन छूटा रह जाएगा, बाद में आप लोग पढ़ते नहीं होंगे. रिकॉर्डिंग देखिएगा तभी समझ में आएगा. प्लीज बी ऑन टाइम. मतलब उतना वो कुछ भारी बात नहीं है ना, टाइम पे आना. Raise your hand if you don't know the answer. Raise your hand if you don't know the answer. अच्छा, सबको आंसर भी आ रहा है, सब किसी को आंसर बताना भी नहीं है. अच्छा, यूसुफ लेफ्ट है ना. ओके. वजीहा, अब्दुल्ला, जानिया, रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो द आंसर. वजीहा, कैन यू टर्न द माइक ऑन? यस सर. आप कब आई क्लास में बताइएगा जरा. 8:33 पर. 8. अच्छा ठीक है, तो आपने अभी तक पढ़ा ना यहाँ तक? सर पढ़ा है. है? अरे मतलब आप थी ना क्लास में यहाँ तक? बॉन्ड एंथैल्पी सारी चीज जब हमने एक्सप्लेन किया आपको. यस सर, यस सर. यू हैव राइट. ओके. सबसे पहले एक बात बताइए आप, SF6 जो है इट इज पॉली एटॉमिक या फिर डाई एटॉमिक? 2 एटम है इसमें या फिर 2 से ज्यादा है? 2 एटम है ना. कौन कौन से 2 एटम है बताइएगा. सल्फर और फ्लोरीन. ठीक है, कितने सल्फर हैं? 6. 6 सल्फर है. और फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन सल्फर 1 है और फ्लोरीन 6. ठीक है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 1 सल्फर और 6 फ्लोरीन. 7 एटम. तो डाई एटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है? पॉली एटॉमिक. ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, है ना. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स नहीं. ऐसे तो अगर आप देखिए H2 को, ठीक है ना, इफ यू सी H2 तो फिर आप बोलिएगा सर इसमें एक ही एटम है. लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही टाइप के एटम है, बट देयर आर 2 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे भी आपके पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, बट इन टोटल अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो देयर आर 6 फ्लोरीन एंड 1 सल्फर, तो 7 एटम्स है. तो पॉलीएटॉमिक वाला केस है. इन पॉलीएटॉमिक्स हमने क्या करते हैं, we break all the bonds. सल्फर और फ्लोरीन के बीच में सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया हमने, and you will get a enthalpy of a reaction, and you will divide this enthalpy of reaction. सल्फर और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे वजीहा? 7 बॉन्ड. 7 बॉन्ड्स होंगे. थोड़ा सोच के बताइए. SF6 का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में. यस सर. ध्यान थोड़ा दिमाग लगा के बताइए ना, बना के देखिए कम से कम. नहीं समझ में आ रहा है तो
एक सेकंड सर। SF6 में कितने होंगे? क्या स्ट्रक्चर होगा SF6 का? सर इसमें वो 8 बॉन्ड्स होंगे ना, एक लोन पेयर थी। 8 बॉन्ड्स ऐसे क्यों? आप नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सल्फर के साथ फ्लोरीन किस तरह से अटैच हो सकता है? 6 फ्लोरीन है, सल्फर कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, यस सर। और उसके बाद बाकी सारे फ्लोरीन। वसीहा पढ़िए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। कितने बॉन्ड्स हो गए बताइए वसीहा? 6। हाँ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है? यस सर के। तो फिर नहीं किया आपने ना, ठीक है। आपने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं किया, उसको कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी के सारे सवाल किए हैं आपने? नहीं सर। तो फिर कैसे कंप्लीट हुआ है बताइए? अगर एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं है अगर किसी चैप्टर का, तो वो चैप्टर कोचिंग में आपके हो चुका है, स्कूल में आपके हो चुका है, आपका नहीं हुआ है वो चैप्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोचिंग में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, और आपका खुद का क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपका खुद का क्या चल रहा है। कि अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है, कोचिंग में हो गया है, तो कोचिंग में तो दोबारा फिर से सर लेकर नहीं पढ़ाने बैठ जाएंगे ना, तो आपको खुद टाइम निकाल के पढ़ना होगा। कुछ डाउट्स है तो बताइएगा। अगर 6 बॉन्ड्स है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल का मिल जाएगा। यहाँ पे हमने वी हैव ब्रोकन 6 मोल्स ऑफ SF बॉन्ड एंड द डेफिनेशन सेज दैट आई हैव टू ब्रेक ओनली 1। तो हम 6 हमने तोड़ा, उसको 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 मोल का मिल जाएगा आपको, ठीक है। राइट दिस डाउन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू नहीं चलेगा, ये बाद में हम जब सवाल पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, पढ़ाई कीजिए। SF6 में आप बोल रही हैं 7 बॉन्ड है, बताइए कितना दुख होगा हमको। राइट, नेक्स्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, सिर्फ ये रिएक्शन नहीं, कोई भी रिएक्शन, एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा गाइस, आई एम टेकिंग अ वेरी जनरल इक्वेशन इन विच यू हैव A2 converts itself to B2, ठीक है। A2 convert itself to B2। now please listen guys, don't write anything, ठीक है, किसी कुछ मत लिखिएगा, अभी सिर्फ सुनिए। I have this AA bond and there is this BB bond. Since A is reactant, A2 is reactant, B2 is product, I can say that I am breaking all of the AA bond. Is that clear? Yes or no? Please tell me guys, हाँ या ना बताइएगा। Because देखिए प्रोडक्ट में इस रिएक्शन को होने के लिए प्रोडक्ट में A तो नहीं है ना, you don't have any A2, that means I have broken all the A to AA bond. Yes or no? I have broken all the AA bond. Is that clear? यस सर। Correct. ब्रेक का मतलब क्या होगा? That means ब्रेक किया है हमने, this will correspond to delta H naught of AA. Now what are we doing to BB? I am forming these bonds. Forming का मतलब होता है opposite of breaking. अगर हम ब्रेक कर रहे होते तो this would have been delta H naught BB. Since it is opposite of breaking, I will add a minus sign here. Now इस particular reaction में क्या हो रहा है? There are only two things happening here. We are breaking the A bond and we are forming the B bond. We are breaking the A bond and we are forming the B bond. That means we are breaking the reactants and we are forming the products, ठीक है। breaking the reactant and forming the products, तो इस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? delta H naught of this reaction will be equal to what are we forming? We are breaking कौन सा? reactant को break कर रहे हैं, तो that is why this will be delta H naught, the bond enthalpy of reactants, minus bond enthalpy of products. Please write this down.
All of you understood the logic behind this particular relationship? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. Please write this down. Write a question after this. Calculate the enthalpy of reaction. आपके पास रिएक्शन है. All of you done ना? This is C2H4. It reacts with 3 moles of oxygen and it gives 2 moles of carbon dioxide plus it gives 2 moles of H2O. ठीक है. डेटा आपके पास दिया हुआ है, बॉन्ड है and you have been given the bond dissociation enthalpy for each of these bond. ठीक है. सबसे पहले आपको दिया हुआ है CH bond. CH bond की bond dissociation enthalpy इन्होंने दी हुई है 414. Bond dissociation enthalpy is in kilojoule per mole. ठीक है. तो CH का दिया है इन्होंने 414. Then you have O double bond O. इसका दिया हुआ है इन्होंने 499 किलोजूल पर मोल. C double bond C. इसका दिया हुआ है इन्होंने 619 किलोजूल पर मोल. Then you have C double bond O. इसका दिया हुआ है इन्होंने 724 किलोजूल पर मोल. Then you have OH bond. This has 460 joules. ठीक है. These are the bond dissociation energy. All of these are in positive. ठीक है. All of these are in positive. सवाल लिखिए, उसके बाद हम बताएंगे सोल्यूशन करना कैसे इसको. All of you done writing this? Yes or no? Please tell me. सबने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए. लिख लिया. चलिए, अब एक बात बताइए. रेज योर हैंड इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ O2. O2 में क्या बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है? टेल मी गाइस. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो. If you know what type of bond is present, double, single or triple in O2, raise your hand. बाकी किसी को नहीं आ रहा. हिबा, नो आइडिया. हिबा, यू हैव नो आइडिया. हाँ, एक सेकंड, आप तो हाथ रेस कर दीजिए ना. ठीक है. अब देखिए, यही सारी चीजें हैं. हिबा प्लीज आंसर, मतलब प्लीज रेस्पॉन्ड किया कीजिएगा. ठीक है ना. अदर मतलब कुछ बोल दीजिएगा. सर आई एम कंफ्यूज, हाथ रेस कर दीजिएगा. ठीक है ना. ऐसे चुपचाप मत बैठ रहिएगा. अगर आपको किसी को भी आंसर आ रहा हो, प्लीज कुछ रेस्पॉन्ड कर दीजिएगा. अदरवाइज हमको लगेगा कि किसी को आ ही नहीं रहा है. अब देखिए,
थर्मोडायनेमिक्स इज गोइंग टू बी इजी, बहुत आसान रिलेशनशिप्स है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अटक जाइएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा करना क्या है, बिकॉज यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ O2। O2 का स्ट्रक्चर कहाँ पे पता रहना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग से पता रहना चाहिए आपको, दैट इट इज गोइंग टू हैव O डबल बॉन्ड O। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, you have carbon double bond O and another double bond O like this। H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H bonded to oxygen and another bonded to hydrogen here like this। ठीक है, now why it is important I will let you know। अच्छा, even for that matter this particular structure of this would have been given as C2H4। फिर आप पागल हो जाएंगे, C2H4 होता क्या है, C2 में यहाँ पे कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड है, so, उसको तो हमने दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन आपको C2H4 भी मिल सकता है। सो यू हैव टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो थर्मोडायनेमिक्स के सवाल नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी ये मान के चल रहा है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है। ओके, नाउ सी हियर, डेल्टा H नॉट R ये निकालना है हमको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस द सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट में देखते हैं, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस तरह के हमारे पास बॉन्ड्स है रिएक्टेंट। So we have what bonds? We have CH bonds, right? So how many CH bond do we have? We have 4 CH bond. ठीक है, plus what else do we have? We have 1 C double bond C, plus what do we have? We have 3 O double bond O। ठीक है, now minus in the product side what do we have? We have 2 moles of, we have 2 C double bond plus we have 2 OH bonds। ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करना है आपको, उसके बाद यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। CH का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताइए, 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CH, 414 प्लस C डबल बॉन्ड C का वैल्यू क्या है 619 प्लस O डबल बॉन्ड O की वैल्यू है 499 माइनस 2 C डबल बॉन्ड O, 2 इंटू C डबल बॉन्ड O is 724 प्लस 2 इंटू OH इट इज इक्वल टू 2 इंटू 460। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट्स के अंदर बॉड मास आई होप सबको आता हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन, ब्रैकेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है पहले उसको कीजिएगा। ठीक है, इन सब चीजों में गलती मत कर लीजिएगा, एंड देन टेल मी द आंसर। कैलकुलेट करके प्लीज सेंड दी आंसर। ओके वजीफा, लेट मी सी।
अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दिया। 3 × 499 होगा। इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 3 × 499, ठीक है ना? हाँ बस वो 3 × 499 होगा। 499 यानी कि आप 1000 और ऐड कर दीजिए ना, 1000 और ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। ओहो, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड आप लोग प्लीज जरा रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए जरा। यहाँ पे हमने दो तो मल्टीप्लाई किया, बट आई फॉरगॉट दैट ईच CO2 हैज 2 CO, है ना? तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। कैन यू गाइस प्लीज करेक्ट दिस? I have 2 moles of CO and each mole has 1 and another 1. We have 2 CO bonds. तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। We have because 2H2O. एक वाटर मॉलिक्यूल में we have 2OH and बाकी आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। I miss this 2 2s. Because since it is ये मतलब combustion है, तो आपके पास ना डेल्टा H0R will be in negative, ठीक है? पॉजिटिव आएगा तो प्लीज देखिए कुछ ना कुछ दिक्कत है। Since वजीहा you were getting positive, तो हमको पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको 4 कर लीजिए आप, 4 हियर एंड 4 हियर।
ओके, बस ये आपका तो नेगेटिव में आ रहा है। हिबा, आप फिर से कीजिए ना। -964 आ रहा है। I just did this in calculator. It was -964 किलोजूल पर मोल। लेट मी सी आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये ठीक है। ये आपने नहीं किया ना, आपने 460 को नहीं किया। 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 44 में अगर आप ऐड कर दीजिएगा 460 460, देन यू विल गेट द Yes. आंसर। ठीक है, right, next, enthalpies of physical transformation. Enthalpies of physical transformation. ध्यान रखिए, सबसे पहले इसमें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग अब समझ में आ जाना चाहिए। When you have 1 mole of solid and it transforms to liquid, then it is known as delta H naught of fusion. ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? डेल्टा H naught FUS. When you have 1 mole of liquid, it changes to gas. We call this delta H naught of vaporization. जब आपके पास है 1 mole of solid and it converts to 1 mole of gas, we call this delta H naught sublimation. लिखिए enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration. This is enthalpy change when 1 mole of gaseous ion, enthalpy change
when 1 mole of gaseous ion is hydrated by water. For example, if you have cationic species Na plus, then oxygen is more electronegative. So it will have delta negative charge. It will interact with this Na positive. Similarly, there will be other water molecules. They will be interacting with this sodium positive, and sodium positive has positive charge. Yeah, that is why. Oxygen, other hydrogens, delta negative. Oxygen, other hydrogens, delta negative. Okay. So this is known as what? This is known as enthalpy of hydration. Similarly, अगर आपके पास Cl negative होता है ना, for example, if you have any anionic species, then the hydrogen are going to interact. Hydrogen. Why? Because hydrogen is attached to oxygen, which is more electronegative. Hydrogen will have delta positive charges. And that is why they will interact with chlorine. Okay, like this. So this is known as enthalpy of hydration. इसके बाद लिखिएगा, this is important topic, lattice enthalpy. Now, what is lattice enthalpy? The enthalpy change when 1 mole of an ionic compound, the enthalpy change when 1 mole of an ionic compound dissociate into its ions in gaseous state. Its ions in gaseous state. Now see here. For example, you have sodium chloride. What are its ions? Na plus gas plus Cl negative gas. Okay. Now this will correspond to some delta H naught lattice, जो होता है 788 kilojule per mole. Okay, obviously it is going to require energy because you are breaking the bonds here. Okay. Now there are two ways to get this value. We can either calculate it. Calculate कैसे करेंगे तो उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए. Or we can measure it. We can measure this. Why? What we can do an experiment जहाँ पे we take 1 mole of NaCl, we take 1 mole of NaCl and we break it, and that is going to destroy 1 mole of sodium chloride, and it is also going to take energy. So better way क्या है? We think of something in order to calculate this particular energy, है ना? हम लोग calculate करने की कोशिश करेंगे. We are not going to do experiment. We are not going to waste any chemicals. We are not going to waste our time. We are not going to waste any energy sources. What we are trying to do, we are going to try and we are going to calculate this particular, है ना? हम लोग देखेंगे कि is there anything there जिससे हम calculate कर सकते हैं इसको बिना किसी experiment किए हुए. So see,
let us go back. If I talk about NaCl, NaCl would have been formed by Na and half Cl2. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं NaCl. This is made up of sodium in solid form plus half of Cl2 gas. I have written this in such a form that it corresponds to the opposite of, अगर आप Na plus Cl2 लिखते तो और 1 mole of NaCl बनता, then it would have been the enthalpy of formation of NaCl. But right now I have written it oppositely, so it is going to be negative of enthalpy of formation of NaCl. Now we have here sodium and we have here half Cl2 gas. तो पहले sodium को लेते हैं. So we take sodium solid, और sodium हमको gas में चाहिए सबसे पहले. So I will make this into sodium gas. So what we have done now, we have done atomization यहाँ पे. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Can all of you see? We have done atomization, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Sublimation बोल सकते हैं, कोई भी चीज बोल सकते हैं. Delta H naught of, let us say, sublimation, और delta H naught of atomization. किसका? Na का. Now, next I want to remove an electron. So sodium gas, you remove an electron, you will get Na positive, and this will correspond to the ionization enthalpy of sodium. ठीक है, तो आपको Na गैस तक मिल गया. Now let us move on to Cl2, और इसको हम लोग देखते हैं. Now we will do the Cl2 part. Cl2 में आपके पास क्या है? You have half Cl2 gas. सबसे पहले तो इसको आप क्या कीजिए, आप कन्वर्ट कीजिए. हाफ Cl2 का मतलब you have only one chlorine ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए क्लोरीन गैस में. Now this will correspond to what? This will correspond to the bond dissociation energy. Why? Because here we have half mole of Cl2. ठीक है, हाफ मोल ऑफ Cl2 का आपने ब्रेक किया, तो 1 मोल का कितना होता है? डेल्टा H naught Cl, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से. Why? Because you have broken only half, है ना, half mole of Cl आपने ब्रेक किया है यहाँ पे. Now after that I will take this chlorine gas and I will add an electron to it, so it will become chlorine negative gas. Now this is what? This is electron gain enthalpy. ये क्या है आपके पास? electron gain enthalpy. Now let us look at all of these reactions. अब इन सबको अगर हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें तो you can see that we can cancel a few things. हम लोग क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं? See, sodium solid can get cancelled with sodium solid. ठीक है, then you have sodium gas, it will be cancelled by sodium gas like this. ठीक है, then you have half Cl2, ये तो रहेगा, you will ये Cl2 and this Cl2 can get cancelled. Then you have this Cl will get cancelled by this Cl. तो बचा क्या आपके पास? The remaining reaction is only NaCl. This is in solid. Is going to give आपके पास बस बचा सोडियम पॉजिटिव गैस एंड Cl नेगेटिव गैस, है ना, और यही किसके करस्पॉन्ड करेगा? दिस विल करस्पॉन्ड टू डेल्टा H naught ऑफ लैटिस. नाउ वी हैव गॉट अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जिसको अगर हम ऐड अप करें तो इट विल गिव मी द डेल्टा H naught ऑफ लैटिस. तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा H naught इलेक्ट्रॉन गेन, किसके लिए? क्लोरीन के लिए, प्लस डेल्टा H naught Cl bond dissociation enthalpy of chlorine divided by 2, plus delta H ionization for sodium, plus delta H naught sublimation for sodium, minus delta H naught formation of NaCl. ठीक है, so this complete thing is going to give me the delta H naught lattice. इसको अलग से लिख देते हैं जरा इधर करके. Okay, so rather than doing the reaction, rather than breaking NaCl, what we did, we will get all of these data in the data booklet. ठीक है ना,
आपको आराम से ये सारी डेटा मिल जाएंगे डेटा बुकलेट में, और आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट ऐड दिस अप टू गेट द लैटिस एंथैल्पी. चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. So this approach it was given by Born and Haber. इस प्रोसेस को इस तरह के अगर कन्वर्जन्स को, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करने को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द बॉर्न हेबर साइकिल. व्हाई इट इज नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल? बिकॉज आपके पास एक रिएक्शन है Na प्लस Na solid plus half Cl2 gas, it is going to give you NaCl solid. Now you can first of all convert this sodium solid to sodium gas using delta H naught sublimation. Further you can change this to sodium positive gas using delta HI. Similarly chlorine के लिए क्या कर सकते हैं आप? Chlorine को first of all you can convert it to Cl2 से chlorine. This will be
delta H naught Cl upon 2, and then you can further convert this to Cl negative. This will correspond to delta H electron gain. Now sodium plus chlorine आपको कब मिलेगा? If you have, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन. दिस इज डेल्टा H नॉट लैटिस. दिस इज अ डेल्टा H नॉट लैटिस. अब ये देखिए, पूरा एक साइकिल बन चुका है. नाउ इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट लैटिस, आप क्या फॉर्म में जा सकते हैं? यू कैन गो दिस वे. तो आप देखिए, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन के अपोजिट जा रहे हैं, तो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन नेगेटिव में आएगा. डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन, डेल्टा HI सब इसके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट विल बी इन पॉजिटिव. ठीक है, तो इन टोटल अगर आप देखें तो कितने प्रोसेस होते हैं, लाइक what are the different steps that you can have? You have the first, you have step 1, 2, 3, 4 and 5. आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि बॉर्न हीबर साइकिल में हीबर साइकिल इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम. उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, देन बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ Cl नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी ऑफ Cl, और उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl. These are the 5 steps. ठीक है, now write next, enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Please write the enthalpy change when 1 mole of substance, the enthalpy change when 1 mole of substance gets dissociated specific amount of solvent. ठीक है, इसको डेल्टा H सॉल्वेशन लिखते हैं. आपके पास है AB सॉलिड, आपने इसको क्या किया? A plus aqueous plus B negative aqueous. Now in this process what has happened? You have first of all converted this to, आप ऐसे कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, A plus gaseous स्टेट में एंड B नेगेटिव गैस स्टेट में. तो ये क्या हो गया आपका? दिस करस्पॉन्ड टू डेल्टा H नॉट लैटिस. और जब आप AB को आप वाटर से हाइड्रेट करा रहे हैं, दिस विल करस्पॉन्ड टू एक्वस, एंड दिस एंथैल्पी चेंज विल बी डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन. Okay, because these A positive and B negative are interacting with water, and that corresponds to delta H naught hydration. So we can write delta H naught solution, it is equal to delta H naught lattice plus delta H naught hydration. लास्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. Just a second, guys. Right, next,
enthalpy of dilution. Enthalpy. Now, what is enthalpy of dilution? That is the enthalpy change when specific amount of solute it is added to a specific amount of solvent. Okay, specific amount of solute it is added to specific amount of solvent, and slowly you are diluting it. Please write enthalpy change. Is added to specific amount of solvent. So initially मान लीजिए आपके पास you have a container and there is a solute. There is no water. You add water to it, it will become dilute. You can further add water, it will get more dilute. You further add water, now it has become more and more dilute. Now, as you keep on increasing, as you keep on doing dilution, on successive dilution, the enthalpy change it approaches a limiting value. एक time के बाद आपके पास enthalpy of dilution will be zero. कोई effect नहीं होगा dilution का, right? On successive dilution, the enthalpy change approaches a limiting value. All of it done? Yes or no? Please tell me.